Okay, today we'll start the topic mass, volume, and density and weight. So first of all, we will see what is mass. The amount of matter packed in our body is called mass. The SI stands for System International Unit, is kilogram. SI unit is kilogram, kg. And it is also measured in some other units which are named as non-SI units. Grams, tons, these are the non-SI units. In Cambridge rule, always put the values of the quantities in SI units when not strict. Mean जब भी आपको ये नहीं बताया गया कि इसकी यूनिट्स कौन से लिखने हैं क्वांटिटी के, तो हमेशा उसको आपने ऐसे यूनिट में, जैसे ये मैस है वो किलोग्राम में रिप्रेजेंट होगा, टाइम सेकंड में रिप्रेजेंट होगा, वेट या फोर्स जो है वो न्यूटन में रिप्रेजेंट होगा. So these are supposed to be SI units. Next definition is weight. Weight is what? It is the pull of एक gravity. second, sir. Can you go back? Can you go back? Sorry. Can you go back? Can you go up, sir? Okay. I will give you the time to note it down. First, you will understand that. Okay. Okay. Second definition is weight. Weight is what? It is the pull of gravity on an object. Or it can also be defined as it is the force with which the object is attracted by the earth towards its center. And the formula for this is W is equal to mg. If you see here, this one. W is equal to mg, where m stands for mass, g stands for gravity, and the value of gravity we use normally 10 Newton per kg. And now, according to latest rule in CIS for IGCSE, we can use this 9.81 Newton per kg. So you can use this 9.81. Okay. Then we see the unit of the weight. Weight is always measured in Newton because weight is the type of force and the unit will be capital N. Then in the next we see we are taking some different masses. There are some masses and we will use the formula and value of G is 10 or 9.81. So if you use this one, 9 kg mass, so according to formula W is equal to mg, weight would be 9 into 10, 90 grams, 90 Newton. And if the body is of 1 kg, weight would be 10 Newton because 1 is multiplied by with 10. If the mass is 15 kg, so the weight would be 150 Newton. Similarly, for 70 kg, weight would be 700 Newton. Okay. Then we see volume. Volume is what? It is the space occupied by an object. And its SI unit is meter cube. And other units for volumes are centimeter cube, millimeter cube, and kilometer cube can also be taken as. Then we see the what is the difference between area and volume. You know about area is always two dimension, the space between two dimension,
and volume is the space between three dimensions. See, Hmm. it is the surface covered by an object, and volume is the space occupied by an object, and the unit is meter square for area, and this one, and the SI unit for volume is meter cube. That is the basic difference. इसमें अगर आप देखें तो इसका यूनिट जो है वो मीटर क्यूब में होगा, दिस वन, Mm-hmm. और इसका होगा मीटर स्क्वायर में, बिकॉज दिस इज 2 डायमेंशनल एंड दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस. And other units are centimeter square, millimeter square, and non-SI units for volume is centimeter cube and millimeter cube. Right? Okay. Yeah. Then move to the forward. Difference in volume method. इसमें हम ये देखेंगे how you can finding the volume of irregular shaped objects. For example, stone का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं. एक डिफरेंस इन वॉल्यूम, मतलब दो वॉल्यूम्स का डिफरेंस निकाल लें, या फिर ईयर का कैन, या एक और नाम होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं. Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में बनाते हैं. डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर पीस ऑफ स्टोन यूजिंग अ मायरिंग सिलेंडर. मायरिंग सिलेंडर यूज करना है और आपने मेथड एक डिस्क्राइब करना है विद डायग्राम, जिसमें हम बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन क्या है, बिकॉज स्टोन इज सपोज टू बी मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट हैज नो स्पेसिफिक शेप. अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोन है, मतलब कोई राउंड शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो अगर मैं इस तरह से बना दूं कोई डायग्राम, लेट्स सपोज दिस इज द स्टोन, so it has no specific dimensions. इसका मैं वॉल्यूम फाइंड करना है. ओके, Hmm. तो अब हम Yeah. इसको in the first step, add a known volume of water to the NC. NC is the abbreviation for miring cylinder. This one, ये जो है, this is the Hmm. miring cylinder, and record its reading as V1. Mean पहले आपने सिंपल इसमें पानी डालना है और उसका इनिशियल वॉल्यूम मेजर करना है. Okay. In the second step, gently immerse the stone into the cylinder. आपने सिलेंडर के अंदर स्टोन को सिंक करवाना है, और इट शुड बी जेंटली. इसको आगे डिस्कस करेंगे. Then gently tap the cylinder a few times and then record the final volume or final reading as V2. In the step number 4, you will subtract V1 initial volume from the final volume, like is that V2 minus V1, and this difference we will find the volume of the stone. This difference will actually give the volume of the stone. Hmm. Okay. Now we see some questions regarding this experiment. Explain why the stone must be immersed gently into the cylinder. This will to prevent splash moving out of water from the cylinder, or in order to get accurate result. आपने स्टोन को बहुत तेजी से इसमें थ्रो नहीं करना, बल्कि आराम से रखना है उसमें, क्योंकि अगर आप थोड़े से डिस्टेंस से उसको गिराएंगे तो द वाटर विल स्प्लैश एंड मूव आउटसाइड द सिलेंडर, और इस तरह से वो जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कम हो जाएगा, और इस तरह Hmm. से हमारे पास इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा. So for the accuracy of, to get the accuracy or accurate value, we
put the stone gently. Okay. Hmm. Then next question is explain why the cylinder is tapped a few times before finding the final volume. अब हमने इसको टैप क्यों करेंगे, क्यों उसको स्टायरिंग करेंगे, मतलब कोई भी चीज डाल के उसको थोड़ा सा घुमाएंगे. बेसिकली होता ये है कि लिक्विड के अंदर एयर के ट्रैप हो जाती है और उसके बबल्स बन जाते हैं. तो इस तरह से भी वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड का और वो दोबारा इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा. So to evacuate the dissolved air from the water so that we get accurate volume reading. Okay. Right? And then in the Hmm. question, list the precaution you should take when finding the volume of a liquid placed in a measuring cylinder as accurately as possible. मतलब कि अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है. Number one, place the measuring cylinder on a flat horizontal surface. Number two, read the correct meniscus. Meniscus क्या होता है? You know about that कि ये अगर आपके पास सिलेंडर है और ये जो तो लिक्विड, जो वॉल्यूम लेवल है, हाँ मेजरिंग लेवल. जी, ये जो लोअर सरफेस कर्व सरफेस है, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस. और आप अपनी आई सेट Hmm. को लोअर मेनिस्कस यहाँ पे सेट कर लें. यहाँ से आपने रीडिंग नहीं लेनी, ना यहाँ से रीडिंग लेनी है, ऊपर से नहीं लेनी, बल्कि कर्व सरफेस जो बॉटम है यहाँ से यू विल प्लेस योर आइज एट दिस एंगल, एट दिस. Hmm. फर्ज करें ये अपर पॉइंट इसका आ रहा है 50 और ये आ रहे हैं तकरीबन 48. तो यू विल टेक द वॉल्यूम 48, नॉट 50, बिकॉज 50 जो है वो उसके पैरेलक्स एरर देगा. तो लोअर Hmm. मेनिस्कस इज दिस फॉर वाटर, लोअर कर्व सरफेस को कहते हैं मेनिस्कस. Then avoid parallax error by placing the line of sight perpendicular to the scale and then place the cylinder in standard laboratory condition. मतलब कि रूम टेम्परेचर आपका तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा और कम होगा तो वो जो मेजरिंग सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम पे अफेक्ट करेगा. Hmm. ओके. Okay. देन in the next question we will see what do you understand by 25 degrees centigrade mark on the cylinder. सिलेंडर्स के ऊपर नॉर्मली 25 डिग्री मार्क हुआ होता है, तो उसका क्या मतलब है? दिस मीन दैट द सिलेंडर विल गिव एक्यूरेट रिजल्ट और रीडिंग फॉर द वॉल्यूम if it is kept in temperature condition of 25. As I have told you that 25 degrees centigrade is the room temperature. Hmm. If the cylinder is kept in colder or hotter condition due to the contraction and expansion of the cylinder, the reading of the volume will be greater or lesser than the actual reading. Right? Hmm. Okay. Okay. एक और क्वेश्चन इसी का बनता है. Describe an experiment to find the volume of a stain using Eureka method or displacement can method. And this is the second method. So first of all, you will try to understand the first method. In the next class, we will see this next method to find the volume of stain. Any question? Okay. No, I understand this. Good.